Kumuna baca. Amin. Pangalan bocah aja ho. चलो बाय बाय इस वक्त डॉन बॉस्को स्कूल ऑटोंखो के यहाँ पे DCPU टीम के साथ मैं आया हुआ हूँ। इस वक्त समय के 3:22 और डॉन बॉस्को स्कूल ऑटोंखो पे इस वक्त हम लोग पहुँचे हुए हैं। नमस्कार वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज DCPU टीम यानी कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की टीम यहाँ आए हुए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे फिर बातें करते हैं। डॉन बॉस्को ऑटोंखो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। चप्पल में क्या कर लिए पर चप्पल two teachers went for teacher training. Training and two teachers went to write exam. Actually, we came from Longing, so we are the child department. So we came here for give some awareness regarding the POXO cases, some rape cases and all. So it was arrange some room for our gathering for all the students and others, so that we can discuss some important topic. For with children? Yes, children, all the students. All the students. So we are inspecting every boarding hostels within Longing district. So we have come from Kuwai. There is also Neighbors visited Kibera also. Now we will inspect your hostels, how the children are staying. And in the meantime, we just wanted to give some awareness also to the students. This is the surprise inspection. We didn't inform you earlier. We didn't give any surprise. Just we have come for surprise inspection. So we just want to see whether all the how many children are there, how we are staying, the boarding facilities. So first, I think if the students are not ready, we can go and see the processing. Namaskar. लो ऑटोंखो Numbers of teachers. How many teachers are there? 14. And numbers of students? 317. 370. From how many class? One to Nursery to class 8. the middle school. 200? 17. 317 students. Yes. Is there any Or a hosteler? day scholar? There is hosteler, day scholar together 307. Together, Yeah. all total. All total, yes. Hostelers how many? KG, Still now admission is going on, so exactly now there 85.
85. 85 is outside. Now month of June, no, so admission is going on. So some are sick, some still at home. The capacity, how many students? Can accommodate at a hostel in the school. Hostel, Yeah. As far as seat capacity, bed capacity, 120. at hostel. Some seat. Hostel 120. Now this procedure or admitting in taking admission in the school. Procedure. After interview, Yes. after taking interview only, Yes. anybody can take admission here. Yeah. Those who are coming from other school, For other district also, yes, they can join here. yeah. Not only Longdi district, not restricted to Longdi district. Yes, from other districts also they can join, but All over India, we will say. so we are taking first stage according to their class, Yes. and we are taking test, and after that we are giving them seat. Now there are seats vacant seats still, na? There you can give admissions also. No? Yes, we can give. Last year it was 350 students, but this year now 379. At class 8, last year the nursery to class 7 was there. Okay. So this year we started class 8. You have been here for how many years? 2 years. 2 years. Yeah. Before I was in this school, I was in Manmau, now this is Changlan district. Chiangman district, then again Nisha, Nisha. Tisa, then Longdi. Dipoli school. But I was in the This is not Nisa, this is Tisa. Jipuli is Tisa. Nisha. Nisha. After Nisha, after Nisha, Nisha is Okay. there. So you Yeah, are here in that's Longding fine. district only. Yeah. Nisa to Jipuli. Yeah. Both people only, but different. You have only this boys, Pardon? There is? girls also. Yeah. Girls Boys, also. boys also is there and girls also is there. All education. Yeah. Okay, so first let us inspect your hostel. After that we will give some awareness and we'll go. Oh. Okay, let's visit. So the hostel and classroom hostel, the kitchen. Classroom, we just want to see how the school is running. Yeah. So if there is any problem also, if you want to say anything, if you want to ask any help from the so our district administrations or from the education department also, you can just tell us. So we come from we are the child department. We just want to see if the children they are getting all the benefits, all the rights that they have. No? Actually, running this school, father is there, but now he is present. He took teacher for teacher training. Okay. He's in Tinsukia now. So running by fathers only. But for looking after student and teachers, we are here, 2 sisters and hostel teachers are there. 8 teachers are there. What is there? In hostel, 8 teachers are there. 8. Yeah. So looking after children. All are from outside or you have some locals also? Locals means one is from Nevali, Okay. then Borduria, and 3 person from Assam. So let's go in this way first. How many students? 24. And class 5. How many students are there? That one I did not check this class.
But That's as good. for the bench structure, 2 students will sit in one bench, no? They are sitting 3. They are sitting 3. Here, those CCTV facilities available now. I know there was the current problem here. No, you have not installed. CCTV installed or not? No. Yeah, CCTV is very important for setback of the children. That's what is required. Oh, this one go to this one hostel, no? Yes, voice dormitory. Now we have backup for solar generator also. Maybe too much high temperature. Hostel is this one only, no? This is only for big boys. Oh, okay. Senior. Senior. Senior This boys. is- That's So, it. we have that also. Inverter. Light cuma tidak invite yang bilang itu. Place अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है. ठीक है रखा हाँ सोलर का लोग Oh, This is kitchen, refrigerator. Our refrigerator. legal है कि मान लो तो This boys Chito. children. नहीं नहीं तेना itu मानव के बनाने हुई बोले क्या কথা जैसे माल में तो देखते हुए ना This one kitchen. Refectory for for children's. Dining room जहाँ This dinner is ready for ये lunch or dinner. No, nothing is ready. You have to put ceiling. Two fan is required here. Urgently. Ceiling and fan. Otherwise, this and also around this place is very hot. Said we are putting ceiling then also feeling hot. So ये should just sit ना. But one thing is open. Some Yeah, air comes. Yeah, of course. Yeah, something good. Open place. in Longding Panchawani, we used to build house from this tina, no. But in Kanubari side, how can one build this one from tina house? Normal like in RCC and this also we cannot see. It's too unbearable, no, the weather. So this is kitchen. ये वाला kitchen है. Here you can do something. Here drainage system is not good. What benar? नहीं ये नाला सिस्टम में ड्रेन सिस्टम एक स्कूल का नंबर जान। जो भी नहीं है ना उसको the to further. drainage also you can to make the drain system should be properly constructed. not like Yeah. you don't have area and the area is not development. It's not like it also. You know, Yeah. and nice area. Oh, that's what we can. Iron problem is there in water. Chiều nay cái thích là thả có.
Si may ka may lakat ako sa'yo. Yung bakla. Nakamamay. Kaya na chitay. कंस्ट्रक्शन चल रहा है टाइल्स हेलो ओ ये गर्ल्स का Said they are giving the girls a bit. Where is the warden? Warden. Now, Where is she? No. which Bessie? Which Bessie? This study also. Most teachers are well for training. That's inform for teachers, no? Just inform for students. We came from Longding. We are the child department, no? Oh, okay. That's right. The study hall? Miss also come. Inform all Miss teachers, staff, and all, especially warden. Under the step one. That was Girls and those who are staying step one. Now we are making also. I think we खा लिया मुझे पानी तो ठीक है ना? पानी we have to carry from outside. Oh, there is no running water. Yes, so on top waters are working, so now on this is tough, no water. So we are carrying from outside. जेंट्स Boys. गर्ल्स ओके चलो itu overflow यहाँ में पानी ये हैंडपम्प से लेके यूज़ करता है बाकी ठीक है सिर्फ पानी का सुविधा नहीं है हैंडपम्प से यूज़ कर रहा है Oh, coba benar mapat ni. Benar mapat.
Generator chalo. What is fail? If you can on the generator now. This event program, so respect our principal and learning teachers, staffs, and my dear seniors from the Domestic School. So here, the main purpose of our visiting in this school is to give some awareness and surprise, checking we can say. So now we came from Longding district, okay, and we are the Department of District Child Protection Unit. We are from Child Department. We came here to give some awareness regarding some important laws. My profession, I am an advocate. I am very much senior advocate from Longding district. I have been practicing since 20 years as a Guwahati High Court, others at Guwahati High Court. Now I am practicing as a Session Court, Queensa, Longding, etc. So my dear children, here there is one law. Law is here. There is a POCSO. Very important. You can, if possible, get down this one also. आप लोग इसको लिख के भी रख सकता है POCSO. आजकल जो I think you have heard about it or not, I don't know. आप लोग ये बात सुना ही नहीं POCSO के बारे में. और जैसे कि आप लोग जो खास तौर के यहाँ के जो मॉडर्न, खास तौर के मॉडर्न है, वो लोग बहुत सुनना है, बहुत इम्पोर्टेंट है. टीचर लोग जो नॉलेज है, ठीक है, घटना होते रहता है. बेटी लोग घटना लोग अच्छा से सुनिए. ये देखो, यहाँ में है POCSO. POCSO means POCSO. POCSO means there is a short term in full abbreviation. POCSO. POCSO means protection of children from sexual offences. समझ गया? छोटा बच्चा के साथ आजकल ये छोटा बच्चा लोग के साथ रेप करता है, मिस बिहेव करता है. कौन करता है? लड़का लोग करता है, स्कूल की टीचर करता है, और स्कूल में जो वार्डन बैठता है वो लोग करता है. अब टीवी में देखा होगा, न्यूज़ में सुना होगा, है ही नहीं. छोटा बच्चा लोगों के साथ किडनैप करता है, रेप करता है, उसको मार के फेंकता है, लोगों को छुपाता है ही नहीं. ठीक से सुनिए. Later on I will ask you question. Okay? So please listen carefully. अच्छा से सुनिए आप लोग. तो POCSO का मतलब है कि POCSO मतलब जो POCSO means this POCSO children below the age of 18 years. समझ गया? जो 18 years के नीचे है, below 18 years, समझ गया? 18 साल, 18 years के नीचे को हम लोग POCSO बोलेगा. POCSO means children, बच्चा. हम लोग ये मतलब नहीं कि बच्चा मतलब दूध पीता है वो बच्चा नहीं. हम लोग सोचा कि बच्चा मतलब दूध पीने वाले को बोलता है. दूध पीने वाला सिर्फ नहीं है, जो 18 साल नहीं हुआ है, 18 years, उसको हम लोग चिल्ड्रन बोले, चाइल्ड. समझ गया? चाइल्ड. हाँ, हम लोग पूछे. हाँ, चाइल्ड मीन्स बिलो 18 years. समझ गया? बच्चा मतलब बिलो 18 years. आप लोग जितना सब चाइल्ड है, बच्चा है, आपका 18 years नहीं हुआ. तो आजकल स्कूल में देखो, कॉलेज में देखो, जहाँ तहाँ देखो, छोटा बच्चा के साथ रेप करता है. रेप करके बच्चा को मार के फेंकता है. उसके बाद कौन ज़्यादा करता है? टीचर लोग ज़्यादा करता है. उसके बाद जो गवर्नमेंट पुलिस करता है, बड़ा लड़का लोग गुंडा लोग करता है, बच्चा लोग किडनैप करता है. उसके बाद मार के कहीं चुकाता है बच्चा लोग, है कि नहीं? और आपको आई विल टीच यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड एंड बैड टच. समझ गया? बैड गुड टच यहाँ लिखा हुआ है. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेफ्टी. आपकी सेफ्टी की. समझ गया? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने ये बेटी, इसको हम बोले बेटी अच्छा से पढ़ाई करो. हाँ, ये क्या है? गुड टच एंड बैड टच है. यस, गुड टच. हमने इसको विश के बेटी अच्छा से पढ़ो, दिस इज गुड टच. लेकिन मैंने इफ आई हाफ हार्ट इंटेंसिटी इससे जूस से पकड़ेगा. और यहाँ में ना आप लोग जो लड़की लोग खास करके बेटी सुनिए, आप लोग यहाँ में जो है ना उसको बैड टच, ये एरिया जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया बोलते हैं लड़की का. अगर कोई भी लड़का बदमाशी करके, लड़का मतलब टीचर का हो सकता है. सुनिए, बेटी को खास करके बेटी सुनिए, लड़की लोग टीचर का हो सकता है, आपके स्कूल में जो खाना पकड़ने वाला कुक भी हो सकता है, और बाहर का आदमी कोई भी हो सकता है. अगर लड़की को छोटा लड़की का कोई लड़का यहाँ पे पकड़ेगा ना, ऐसा ना, इसको बोलता है बैड टच. समझ गया? वो खराब जगह है. और कोई के जो धन उसके बहन को बेटी लोगों के पीछे ना, पीछे में अगर ये जगह में इसे पकड़ेगा, उसको बोलता है बैड टच. समझ गया?
अगर आपको किसी टीचर ने, किसी खाना पकाने वाला कुक ने, कोई पर्सन वार्डन ने, कोई भी आदमी आपको अगर यहाँ में पकड़ेगा, यहाँ पकड़ेगा, उसके बाद आपको कुछ करेगा तो आपको क्या करना है? हम लोग प्रिंसिपल मैडम को कंप्लेंट करना है। यस राइट, कंप्लेंट करना, समझ गया? लेकिन आज करेगा आपको तो आज ही कंप्लेंट करना है। आज ये ऐसे नहीं होगा कि आज आपके साथ कुछ खराब काम कर दिया, आप 10 दिन के बाद बताएगा, 20 दिन के बाद बताएगा, नॉट लाइक दैट, समझ गया? If incident occurred today, we have to inform the principal madam today itself. आज ही inform करना है। If principal madam is not available in your school, then you can also inform the teachers. दूसरा टीचर है, either hostel warden, hostel warden है ना, उसको बताना है कि हमको ओवरमी ने ऐसे पकड़ा है, समझ गया? अगर आप गांव जाएगा, वेकेशन में आपके गांव जाता ना, गांव में जाने से आपके साथ कोई लड़का यहाँ में पकड़ेगा, यहाँ पकड़ खड़े से वो बेचता से, तो आपने अपना माँ पिताजी को बताना, समझ गया? तो माता पिताजी को बोल के आप लोग पुलिस थाना में जाना है। क्योंकि ये जरा हो गया बचपन से पकड़ करके, तो हम लोग लॉ पढ़ाया गया कि कोई भी लड़की के साथ, सिर्फ लड़की नहीं, आज के छोटे लड़का के साथ भी मिसबिहेव करता है लड़का ने, वो भी जेल जाएगा, 20 साल की सजा है। लेकिन हमको प्रोवाइडेड वी हैव टू लॉज कंप्लेंट बिफोर नियर बाय पुलिस स्टेशन, लेकिन हम पुलिस थाना में कंप्लेंट करना पड़ेगा, तो वो आदमी जो आपके साथ हरकत करता है वो आदमी जेल में चला जाएगा, समझ गए ना? उसका बाद इसमें लिखा हुआ है, लॉ में लिखा है कि चाइल्ड में हम बता रहे, चाइल्ड मतलब लड़की जो है 18 ईयर्स, लड़का जो है 21 ईयर्स होना पड़ेगा। वो अभी अर्ली मैरिज के बारे में हमको मैडम यहाँ में है, मैडम बताएगा। तो हम लोग चाइल्ड निकलने में हम जो है लीगल ऑफिसर है, हम लीगल ऑफिसर है, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर है, ये जो है CWC बोलते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का नोटिस डिस्ट्रिक्ट का चेयरपर्सन है। हम लोग की ड्यूटी है कि बच्चा को बचाना है, बच्चों को बचाना है कि सेक्सुअल हरासमेंट, खास करके सेक्सुअल हरासमेंट से बचाना है। और आप लोग अभी पढ़ाई पर ध्यान देना है, जब तक MA नहीं पास करेगा, जब तक BA पास नहीं करेगा, आप लोग पढ़ाई में ध्यान देना है। अगर आपको माँ पिताजी बोलेगा कि किसी के बच्चा पूछने के लिए चलो, बच्चा पूछने के लिए मत जाइए, समझ गया? आप लोग दूसरा का बच्चा पूछने के लिए मत जाइए, दूसरा घर में नौकर बन कीजिए, नौकर बन के बैठेगा तो आप जिंदगी में सक्सेस नहीं होगा। आप नौकर नहीं करना है और दूसरा घर में बच्चा पूछने के लिए नहीं देना है। माँ पिताजी अगर आपको बोलेगा कि तुम दूसरा का बच्चा भूखो, तुम बोलो नहीं मम्मी पापा हम पढ़ेगा, हम दूसरे का बच्चा नहीं भूखेगा, ऐसे बोलिए हाँ। और मम्मी पापा आपको बोलेगा तुम लोग पढ़ाई छोड़ दो, तुम नौकर बनो, दूसरा का नौकर बोलो, मम्मी पापा हम BA पास करना है, MA पास करना है, हमको दूसरा काम नहीं करना है, समझ? नौकर बनो, खाली पर्सन होता है कि नहीं, जैसे खाना बनाने का उसको नौकर बोलता है, उसको चाइल्ड लेबर बोलता है। चाइल्ड लेबर मीन्स आपका जो 16 ईयर्स से नीचे जो भी आदमी दूसरा घर में काम करेगा उसको चाइल्ड लेबर बोलता है। जो चाइल्ड लेबर कराएगा वो आदमी को जेल में डालेगा, समझ गया? केस पॉक्सो केस बहुत आता है हम लोग पास, लेकिन अपना फॉल्स इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, समझ गए? गलती जो नहीं होने वाला इन्फॉर्मेशन नहीं करना है। जैसे कि समझ गया आप किसी के साथ दुश्मन है, कोई लड़का का दुश्मन हो रहा है लड़का के साथ, आप ये मत बोलिए कि वो लड़के ने हमको रेप किया है, वो लड़के ने हमको ऐसे पकड़ा, बोल के नहीं होने वाला कंप्लेंट नहीं देना, समझ गया? अगर ऐसा गलती रॉन्ग इन्फॉर्मेशन करेगा थाना में तो आप भी जेल जा सकता है। क्या में लिखा है, सेक्शन है ना, सेक्शन 51 में लिखा है कि आपकी जेल जा सकता है। लेकिन आप जो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना, सही वाला इन्फॉर्मेशन देना है। सच आपके साथ कोई गलत किया है तो आप जरूर पुलिस थाना में बताइए। और पुलिस थाना में बोलने के लिए आपका मैडम यहाँ पे है, ये लोगों को खबर आपको मैडम को बताना है या प्रिंसिपल को बताइए कि हमारे साथ वो लड़का ने ऐसे किया है, समझ गया? तो मैं लॉ पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है, आपको नहीं समझा हो चुका है। आपको कोई अनजान आदमी दुकान में चलो, बाइक में बैठो, मिठाई खाओ, चलो गाड़ी वाले घूमने जाएगा, कहीं घूमने जाएगा, बोला से आप लोग को क्या कहता है, जाना नहीं जाना? यस, नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। अब इसको प्रिंसिपल को फोन करो कि हमको वो लड़का ने मिठाई दे रहा, वो लड़का ने हमको वहाँ चलो बोला, बोलते उल्टा प्रिंसिपल मैडम को, ये लोग को मैडम को आप लोग खबर देना कि हमको वो लड़का ने बुला रहा है, बोल के बताओ, तब उसको हम पकड़ेगा, पकड़ के जेल में डाल देगा, समझ गए ना? तो अभी आप लोग कुछ डाउट है गुड टच बैड टच के बारे में? इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज टेल मी। और अब कुछ सवाल पूछना, इफ एनी डाउट यू कैन आल्सो आस्क क्वेश्चन टू मी।
अभी ओपन है, इट इज ओपन फॉर ऑल। बेड टच करने से आप लोग को क्या करना है? चॉकलेट किसको देना है? या अगर प्रिंसिपल मैडम टीचर ने किसको देना है? यस, टीचर और प्रिंसिपल यहाँ से महाविद्यार्थी को या भैया को बताना है, समझ गया? तो अभी कुछ पूछने के लिए है, डाउट है आपका? विष्णु कुछ डाउट है, बोलिए कुछ नहीं डाउट, ठीक है, समझ गया ना? और हम लोग विल कम, विल विजिट अगेन एंड अगेन, हम लोग भी आते रहेगा ताकि The students, what I saw here in Longli is after 6-7 they used to leave school. But I thought they used to go outside district and outside state and go and work in some private agencies. है कि नहीं? आप लोग का बस्ती से भी बहुत होगा। आप लोग बाहर में पढ़ाई छोड़ के बाहर में काम करने जाते हैं ना? Actually, the topic we have chosen to give awareness, it is a very big, means it's a very some subject that I think most of the children here they will not understand. So the main thing which we want to teach them is good touch and bad touch and RTE. I don't think anybody will know what is RTE, right to education. RTE is RTE, right to education. RTE is right to education. What is right to education? I will teach you only about right to education and touch and bad touch. And about that also. But it is very important for the staff and the non-teaching staff. This is for you. So we call all the teaching staff, non-teaching staff, because this the child law, it is a very very sensitive experience. Even it is bigger than like very difficult like rape and murder and all. The child, if any crime happens to any child, that law is very sensitive. So you have to know about it. The basic law regarding child, which we have this POCSO Act and which we have Juvenile Justice Act. I think you must have heard about it, and you will have to know some basic knowledge about POCSO and Juvenile Justice Act as you are teaching the children here. So you have to know about that. The teaching staff and the non-teaching staff, you will have to know about that. So the children, mostly you already have understood what is good touch and bad touch, isn't it? And after that, slowly you get to know what is POCSO and what is this and that. But firstly, that what is good touch and bad touch. आप लोग को like what sir has told you that good touch is like touching your arm, very good. Okay, you did very well. Okay, that is good touch. But if someone is touching you like this, see. Okay, it's like this, no? If you feel awkward, हाँ, आपको किसी ने ऐसे छुआ है, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, that is bad touch. So whenever something happens to you like that, you should not keep quiet, हाँ. If you cannot tell your principal or your teacher, you can tell your friend, हाँ. You can tell your friend, you can tell someone, and you together you can go to the principal. But you should not do that, because that is the starting of any crime. सबसे पहले आपको छुएगा, and after that, if you don't hesitate, if you don't complain, then they will go further, isn't it? So they will go further. You should not let them go further. So all the teaching staff and teaching staff, especially principal teachers, it is very important to keep such awareness programs time to time. If you want any help from us, myself, I'm also an advocate. I'm protection officer in the District Child Protection Unit. I'm practicing here in Longli Court. So as well as I'm also looking after the rights of the children in Longli District. So time to time we used to visit schools and villages to give them awareness about this child rights and all the laws related to child. So you know about the child rights, it's not like that. Even the parents, even the teaching staff and everyone, आप लोग को मालूम होना पड़ेगा. But unknowingly you are doing something that
sometimes it happens like that. You didn't feel that it is wrong, but it was wrong. It can happen like that, right? आपको पता ही नहीं चलेगा that is the wrong thing. But if someone happens to complain and you realize that नहीं हमने I didn't do that in that intention. It's like that also. So, but I'm going to tell you the staff and the non-teaching staff, the elders, in law there is no excuses. If you happen to do anything which is against the law, which is not good, then you will be punishable according to the law, isn't it? So, knowing the basic knowledge of the law is very important for any hostel staff, wardens, teaching staff, non-teaching staff, and it is very important for the principal in charge also. You just have to monitor everything, that everything is under control. Like in the girls' hostel, you cannot keep any gents warden, and anytime you have to guide them. And the washroom and also you have to keep them separately. Washroom also, boys' washroom and the girls' washroom should be different because they are some are adolescents. These all are children. There's more one, but some are adolescents. So you cannot keep the washroom and bathrooms also together. So that should be separated. And hostel also should be separated in different places. So this is a co-education institute. So you have to know certain rules which you have to see, because now it's not like this is a private school. Don Bosco is a private school, but it is under the this one district school education, isn't it? And we are also looking after the children, whoever is living this district. So time to time we will come. Like today, we have come today in a surprise inspection, and we have the authority to inspect any school. Like we don't need tours and all. We'll come suddenly. We'll give a surprise inspection whether the children they are getting their all the facilities and they are well looked after or not. Because the children, you cannot deny the rights of the children, isn't it? So it is very important. So any matter, if you wanted to know anything about any related matters relating to child, you can contact us. We are here in Longling. So our office, District Child Protection Unit and Child Welfare Committee office, is inside the DC office complex only, and we'll give you our phone numbers also. You can contact us together. We can work for the welfare of the children, isn't it? So class 8, and nobody can deny your education. आपको पढ़ना ही पड़ेगा. If your parents deny that you don't study, आपको नहीं पढ़ाएगा. आपका छोटा भाई को घर में भूख के दे दो. You don't need to go to school. हाँ, because right to education means आपको education मिलना पड़ेगा. आपको गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन, आपको कंपल्सरी एजुकेशन का राइट दिया है. एंड नो वन विल सिट एट होम काम करके बर्तन वाले बुला के अपना भाई छोटा भाई बहन को भूख के घर में नहीं बैठेगा. ये आप लोग को नहीं बता रहे. आप लोग घर में जाके आपका पेरेंट्स को बताना है. मैडम लोग आया था, हम लोग का 18 ईयर्स तक पढ़ाई करना ही वो बोलता है. She's from Asia. It's to be Manipur or something. she's from Borderia, she's from Dibrugarh, and sister is from Nagaland. And she is sister and myself also sister. So I am from Assam, she is from Nagaland. And other teachers, the scholar teachers, and 2 teachers went for teacher training, and 2 teachers went for and 2 sir teachers are there. Is it gents teacher? They are from Assam. One is from Duduma, one is from Golaghat. For looking after bigger boys. Maybe we know your sister or all. We have no idea. Oh, yeah.
for normal time we are wearing normal dress. Yes. We have dress, but we are normal time means like we are staying with children. So everywhere we have to see. So we are wearing like simple dress. I'm also same company of the Catholic. I'm the Christian Catholic. We are teacher, sister, and myself, disabled sister. Our congregation means our this one center is in Tinsukia. So we came to see look after children. So principal is there is one principal, father is there, Father C.J. Matthew, and headmistress also is there. She is the scholar. So look, just you may go, no problem. But just our madam has already told you all that maintain discipline and manner. This is the symbol of good student. Beginning. Yes. The main symbol of good student is we have to behave. Behavior and manner is respect your teachers and the senior. This is very much important for student. Mày nhá. Hara lên nhé. Sát lưng mày chale. Lanot mày chate. Very good. Kumana baca. Pangalan bocah kajong ho. Kuman belawan. Hah? Nang belaman ke? Hah? Itu Lain bang? Opi kelas. Openok. Openok. बस्ती का नाम क्या है? चलो बाय बाय। खुशी हो रहा है।